हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 𝙊𝙎𝙎𝙎 एजुकेशन। पुणी गोटे नुआ टॉपिक सहित आपण मानकु वेलकम करिछि। आज आम डिस्कशन करबा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो प्रीवियस वीडियो मु कहिथिले कि सिस्टम वाइज डिस्कशन करबा। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जोटा के मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु बहुत कलेक्ट करके नेके आछि, जहा कि हमर अपकमिंग एग्जाम तो नर्सिंग ऑफिसर विथ एएनएम समस्त एग्जाम पई मोस्ट वेरी हेल्पफुल हेबो। तो वीडियो जमार भी स्किप करेंगे, मुझे आपको विथ डायग्राम सहित आपको क्लारीफाए करी। ठीक अच्छे, टॉप 50 एमसीक्यू रहबो। तो लेट नगर मु स्टार्ट करुच्ची वीडियोटा को। तो नंबर 1 क्वेश्चन आम जीवा। देखो नंबर 1 क्वेश्चन कौन कहूँ ना, कहला द सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस कंपोज ऑफ व्हिच टू प्राइमरी स्ट्रक्चर। नंबर ए रे ऑप्शन अच्छी सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन, एफरेंट नर्व, इफरेंट नर्व, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, cranial nerve and spinal nerve। तो ऑप्शन टा कौन हबा? तो आम समस्ते जानिछे जेहु सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो कहा का गुने से कंसिस्ट करता है ना, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। देखो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो यहाँ है स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज होची हमर कोन हमर ब्रेन। देन आम आसबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच टाइप ऑफ सेल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द सिग्नल थ्रू आउट द नर्वस सिस्टम। तो कौन टाइप ऑफ सेल जेटा कि हम रैपिडली ट्रांसमिशन कर सिग्नल थ्रू द नर्वस सिस्टम। नंबर ए रे कहला कौन ना, हमर ग्लियल सेल, oligodendrocytes, neurons and astrocytes, and the correct answer is neuron which is more एवं highly speed transmitted through the signal to the nervous system। तो करेक्ट आंसर होची कोन ना, हमर ऑप्शन सी न्यूरॉन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन रे कहला द insulting sheath around may axon and CNS which speed of signal conduction is formed by। जोटा कि द इंसुलेटिंग हेल्थ sheath around the कौन एक्शन एवं इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम which is speed of signal conducting is formed by कहा द्वारा फॉर्म होता है ना, आमर कौन कहला C1 सेल, ओलिगोडेंड्रोसाइट, माइक्रोग्लिया एंड एपिडर्मल सेल। तो यहाँ कौन ना, व्हिच इज फॉर्म बाय ओलिगोडेंड्रोसाइट। देखो मु आपण मानक डायग्राम टा मु शो करूची। देखो दिस इज कौन नाम ओलिगोडेंड्रोसाइट। ठीक अच्छे। देन आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 कहला द फ्लूइड दैट सर्कुलेट around the brain and spinal cord provide quickening and nutrient transport is called। ताकू कौन कहते जोटा हम ट्रांसपोर्ट करते स्पाइनल कॉर्ड अराउंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कौन ना, प्लाज्मा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड और साइनोवियल फ्लूइड। तो कौन आम समस्त जानिछे को फ्लूइड थाए CSF। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। देन आम आसवा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रे कौन कहला ना, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द meninges surround the CNS। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ meninges हो ब्रेन रो कौन जिनटा कि आम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सराउंडिंग करिछि। कौन आउटर लेयर कौन कही था? नंबर ए रे अच्छे कौन पायोमीटर, आराक्नॉइड, ड्यूरामेटर, सबआराक्नॉइड स्पेक्स। तो जेहेतु आउटर मोस्ट कहे आउटर मोस्ट होमर कौन आमर ड्यूरामेटर। ठीक अच्छे।
तो करेक्ट आंसर होची हमर कोन ना ऑप्शन सी। देखंतु डायग्राम मु देखुची देखंतु आउटर मोस्ट लेयर एठी कोन अछि ना डुरामेटर देन मिडिल होची कोन सब पैराग्नर स्पेस देन इनर मोस्ट होची हमर कोन पायमेटर। ठीक अछि बुझिले। देन आबसिबा नेक्स्ट एठी कहिला which lobe of the cerebrum is primarily responsible for voluntary movement, exclusive function and personality। तो को लोब सेरिब्रम रो को लोबटा कोन वॉलंटरी मूवमेंट एवं फंक्शन एवं पर्सनालिटी को रेस्पोंसिबल करथाय और सर्व करथाय। तो नंबर 1 ऑप्शन रे अछि कोन ना हमर पेरिटल लोब, frontal lobe, temporal lobe and occipital lobe, and which is the correct answer is frontal lobe। option B is the correct answer। ठीक अछि। then number 7 को आसीबा एठी कहिला कोन द प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स इज लोकेटेड इन द। तो प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स ता हमर कोठी प्रेजेंट थाय कहिला फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, occipital lobe and insula। तो करेक्ट आंसर इज प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स रहउछि हमर कोठी ना हमर ऑसिपुट और occipital lobe। करेक्ट आंसर रहउछि ऑप्शन सी। देन आसी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। then number 8 the brain structure responsible for coordinating voluntary movement, posture and balance is। तो ब्रेन रा को स्ट्रक्चर रेस्पोंसिबल करथाय कोऑर्डिनेशन, वॉलंटरी मूवमेंट, पोस्चर एवं बैलेंस को। ऑप्शन ए रे अछि कोन नंबर सेरिब्रम, डायनसेफालन, ब्रेनस्ट्रीम एंड सेरिबेलम। तो करेक्ट आंसर होछि हमरा सेरिबेलम व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर वॉलंटरी मूवमेंट, पोस्चर एवं बैलेंस को कंट्रोल करथाय कोन हमरा ब्रेन रा सेरिबेलम। then आसी हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 कहिला द ब्रेन स्ट्रीम इज कंपोज्ड ऑफ द कहा कहू नहीं कि हमरो कंपोज होइते ब्रेन स्ट्रीम एठी कहिला थैलामस, हाइपोथैलामस एंड पिनियल ग्लैंड, सेरिब्रम, सेरिबेलम एंड थैलामस। देन कहिला ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, देन फ्रंटल लोब, पेरिटल लोब, टेम्पोरल लोब कोन एवं करेक्ट आंसर होची कोन ब्रेन स्ट्रीम तो कंपोज होची कहा कहू नहीं कि ना हमर ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बुझले। देन हम आसीबा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 एठी कहिला vital center controlling the basic life function like respiration, heart rate, blood pressure are located in। तो vital center vital sign हम जानछि कोन रेस्पिरेटर, हार्ट, बीपी। तो को सेंटर ता हम कंट्रोलिंग करि थाय। ऑप्शन ए रे अछि हमर कोन ना कहिला पॉन्स, थैलामस, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड हाइपोथैलामस। मोस्ट इंपोर्टेंट एटा। तो किए कंट्रोल करथाय ना हमर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो करेक्ट आंसर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। तो वीडियो बहुत ही इंपोर्टेंट हला, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मु कलेक्ट करिछि। तो देखंतु 11 क्वेश्चन नंबर कहिला which structure act as the main relay station for most sensory information except smell traveling to the cerebral cortex। कहा को छाड़ी की ना हमर स्मेल को छाड़ी की कोन कहिला ना हमर हाइपोथैलामस अछि, एमिगडा, देन थैलामस, हाइपोकैम्पस एंड द करेक्ट आंसर इज थैलामस। ठीक अछि। तो कोन ना हमर थैलामस इज द मेन रिले स्टेशन फॉर सेंसरी इंफॉर्मेशन। ठीक अछि। देन नंबर 12 the structure that regulate body temperature, hunger,
First link to the nervous system and endocrine system is the किए ना नंबर ए रे अछि पिट्यूटरी ग्लैंड मेडुला ऑब्लांगेटा हाइपोथैलेमस बासल गैंग्लिया तो एठी कोन कहिला हमरो कि हमरो हाइपोथैलेमस कि रेगुलेट हाइपोथैलेमस कोन रेगुलेट करथे ना टेम्परेचर हंगर थर्स्ट एवं एंडोक्राइन सिस्टम ठीक अछि तो करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हाइपोथैलेमस देन क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन नंबर 13 रे अछि the corpus callosum is a large bundle of nerve fiber that connect to the काहे कनेक्ट करते हैं ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड की लेफ्ट राइट हेमिस्फीयर थैलेमस हाइपोथैलेमस सेरिब्रम एंड सेरिब्रम कॉर्पस कैलोजम काहे कनेक्ट करि थाए ना हमर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एवं राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ठीक अछि तो करेक्ट आंसर होछि हमर कोन ना हमर लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड द राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑप्शन एटी कोठी अछि ना हमर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर देन आसी हम नेक्स्ट क्वेश्चन Question number 14. The spinal cord primarily function as a center for reflex action and a pathway for और कौन कहते नंबर ए रे अछि ऑप्शन कौन कहला ब्लड फिल्ट्रेशन स्टोरेज हार्मोन सिंथेसिस ascending and descending nerve tract and WBC cell production तो करेक्ट आंसर हो जी जैसे स्पाइनल कॉर्ड प्राइमरी फंक्शन कौन कहते हैं ना हमर ascending and descending colon nerve tract को कौन रिफ्लेक्स करते हैं ठीक है तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 एठी कौन कहला ना in a cross section of the spinal cord आउ कौन the H-shaped central area composed of कहा वो कंपोज करता है स्पाइनल कॉर्ड एवं शेप ऑफ सेंट्रल एरिया ऑप्शन ए रे अछि देखंतु माइलिनेटेड एक्सन और व्हाइट मैटर जिने ग्रे मैटर CSF meninges and the correct answer is हमरो कोन ग्रे मैटर तो करेक्ट आंसर कोन यूनिवर्सल सेल बॉडी एवं ऑन लाइन एक्शन तो करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन बी देन आस्ती हमरो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 sensory information enters to the spinal cord via कहा थ्रू सेंसरी इन्फॉर्मेशन प्रवेश करिथाए थ्रू स्पाइनल कॉर्ड को नंबर ए रे अछि कोन ना एंटीरियर रूट पोस्टीरियर रूट lateral horn and central canal the correct answer is posterior or dorsal root then next question number 17 the junction where the neuron communication with another neuron and efferent cell is called न्यूरॉन टू न्यूरॉन कनेक्ट ले कौन होता है ना कहला एक्शन नंबर ए रे अछि हमर एक्शन हिलॉक डेंड्राइट्स साइनस नोड ऑफ रैनवियर तो सिनाप्स हो हमर करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन सी देन देखंतु एठी एक डायग्राम अछि एठी कोन कहला तो न्यूरॉन विथ अनदर इटा होची हमरो सिनाप्स दिस इज
one neuron to another neuron जिन्हें कौन कनेक्ट करता है. Then next question number 18. Chemical messenger released at the synapse that transmit signal across the synaptic cleft are known as. कौन कहते हैं ना न्यूरोट्रांसमीटर. करेक्ट आंसर होची कौन न्यूरोट्रांसमीटर होची जेंटा केमिकल मैसेंजर रिलीज करता है सिनाप्स दैट ट्रांसमिट करता है कौन सिग्नल अक्रॉस द सिनाप्टिक क्लेफ्ट. बुझिला. देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 रे अछि व्हिच न्यूरोट्रांसमीटर इज प्राइमरी excitatory neurotransmitter in the CNS and it is heavily involved learning and memory. तो लर्निंग एंड मेमोरी होचे कौन ना आमर ए रही गाबा डोपामाइन ग्लूटामेट एंड सेरोटोनिन एंड द करेक्ट आंसर होचे आमर ग्लूटामेट. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी. देन आसीबा हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. कहला what is the phase during an action potential when the cell membrane become temporarily impermeable and cannot generate a second action potential. कौन ना जिते बेले कौन कहता है केन फेजटा ड्यूरिंग एक्शन पोटेंशियल जिते सेल मेम्ब्रेनटा बिकम टेम्पोरारी इम्परमेबल एवं कैन नॉट जेनरेट सेकेंड पोटेंशियल जो क्रिएट होता है ताकू आम कौन कही था ना पोलराइजेशन डिपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन और रिफ्लेक्टरी पीरियड एंड द करेक्ट आंसर होची कौन आमर रिफ्लेक्टरी पीरियड. ठीक है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. देन नंबर 21 क्वेश्चन कहला डैमेज टू Broca's area typically located in the left frontal lobe result in the difficulty with. जदि डैमेज होइतिबा कोन ना हमर ब्रोकास एरिया तो डिफिकल्टी आम को पार्ट को एफेक्ट करते कौन होते डिफिकल्टी ना नंबर ए रे कहला comprehending spoken language the problem होगा कि producing the articulate speech or recognize face visual perception. तो जदि ब्रोकास एरिया जदि आमर कौन डैमेज हेबो ताहले रिजल्ट कौन प्रॉब्लम कौन हेबो ना आमर करेक्ट आंसर होची producing articulate speech expressive aphasia हमर कौन देखा जीवो. तो करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. देन आसीबा नेक्स्ट 22. देखंतु एटी कहला पार्किंसन डिजीज इज ए प्राइमरी कॉज बाय द degeneration of the neuron that produce which neurotransmitter in the substantia nigra. तो पार्किंसन डिजीज जिनटा कहा द्वारा होता है नाम न्यूरॉन रो डिजेनरेशन होता है जहाँ फल कौन न्यूरोट्रांसमिटरटा कौन होता है नाम सबस्टांटिया नाइग्रा होता है. तो किए न्यूरोट्रांसमिटरटा आमर कौन सबस्टांटिया निग्रा देखा जाता है. तो ए रे अच्छी कौन कहला ए रे अच्छी आमर कौन एसिटाइल कोलाइन डोपामाइन सेरोटोनिन गाबा. करेक्ट आंसर है कौन आमर गाबा. करेक्ट आंसर होची ऑप्शन बी कौन डोपामाइन. करेक्ट आंसर होची हमर डोपामाइन. दे 23 द Pomsky sign in the adult indicate the potential damage to the. जदि
बर्नस्किन साइन देखा ताहले इंडिकेट कौन कही डैमेज टू द देखो यहाँ है आमर कौन बर्नस्किन साइन देखो यहाँ है नॉर्मल जदि कौन एक्सटीरियर प्लानर जो होता तार रेस्पॉन्स कौन आंगुठी गुड़ाक आउटसाइड को जीव ठीक अच्छे डैमेज कौन कौन कर डैमेज नंबर ए रे अच्छी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंसरी नर्वस सिस्टम सेरिबेरम और कॉर्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट और अपर मोटर न्यूरॉन कौन ना आमर अपर मोटर न्यूरॉन टा आमर कौन डैमेज होता है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर और कॉर्टिको स्पाइनल भी आम कही था देन आउटे ट्रिपल बी ब्लड ब्रेन बैरियर फंक्शन टा कौन कहना ए रे अच्छी allow all substance to freely enter to the brain tissue or filter blood produce cerebrospinal fluid or protect to the brain from circulating toxin and pathogen regulate the growth of the bone cell in the skull तो करेक्ट आंसर कौन करी थाए ना बीबीबी कौन ब्लड ब्रेन बैरियर कौन करी which is protect from the brain from enter to फाइट करते कौन एंटर टू द पाथोजेन मानक ठीक अच्छे तो करेक्ट आंसर अच्छे ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्रेन फ्रॉम सर्कुलेटेड टॉक्सिन एंड पाथोजेन देन नंबर 25 ए ट्रांसमिटेड ischemic attack is often considered a warning sign of potential future कौन ना ऑप्शन ए अच्छी सीजर डिजॉर्डर ना सीवीए ना मल्टीपल स्क्लेरोसिस और माइग्रेन हेडेक एंड द करेक्ट आंसर इज जदि इस्चेमिक अटैक होता है ताले कौन आम सेरिब्रल भास्कुलर एक्सीडेंट और कौन आम स्ट्रोक कही था आम सीवीए करेक्ट आंसर अच्छी नंबर बी एटा आसला एम्स एग्जाम रे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठे then number 26 which cranial nerve is entirely sensory and responsible for the sense of smell को नर्व टा आमर रेस्पॉन्सिबल होता है कौन ऑप्टिक नर्व olfactory ट्राइजेमिनल और वेस्टिबुलर कॉक्लाई तो सेंट्रल नर्वस सीएन मीन्स आमर कौन सेंसरी नर्व देन कौन कहला ये ना सॉरी सीएन मीन्स आमर क्रानियल नर्व को क्रानियल नर्व स्मेल एवं सेंस को रेस्पॉन्सिबल olfactory नर्व इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेंस एंड स्मेल तो करेक्ट आंसर है olfactory nerve which is cranial nerve 1 then number 2 रे कहला सॉरी 27 which cranial nerve control the muscle of the eye that cause eyeball eye movement eyelid opening pupil and constriction किए कंट्रोल करता है नंबर है ऑप्टिक ओकुलोमोटर ट्रोक्लियर एब्डक्शन कोटा को cranial nerve नामर cranial nerve थर्ड which is कौन oculomotor is responsible for the eyeball movement eyelid opening and pupillary constriction then next देखो एठी मो गोटे पिक्चर डायग्राम रे अच्छी हमर cranial nerve olfactory आमर रेस्पॉन्सिबल फॉर कौन स्मेल ओकुलोमोटर कौन आई मूवमेंट एंड पीपल रिफ्लेक्स ट्राइजेमिनल होची कौन एटा होची ट्राइजेमिनल कौन आमर फेस सेंसेशन एंड द च्यूइंग रेस्पॉन्सिबल फॉर देन फेशियल रे कौन फेस मूवमेंट एवं टेस्ट देन ग्लोसोफैरिंजियल नर्व होची कौन ना थ्रोट सेंसेशन टेस्ट एंड स्वालोइंग देन एक्सेसरी रे कौन आमर नेक मूवमेंट देन पले आसला आमर कौन ऑप्टिक होची आमर कौन विजन
देन ट्रोक्लियर होची आई मूवमेंट एब्डोसेंट होची हमर आई मूवमेंट ट्रोक्लियर मध्य आई मूवमेंट पे रेस्पोंसिबल देन वेस्टिबुलर कोक्लियर होची हमर कोन हियरिंग एंड बैलेंस को कंट्रोल करते देन भागस नर्व टा कोन ना हमर मूवमेंट सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन इन हाइपोग्लोसल होची कोन ना मूवमेंट एंड सेंसेशन एंड एब्डोमिनल ऑर्गन एटा मोस्ट इंपोर्टेंट एक मार्क सुनिश्चित गुटे क्वेश्चन आसपा मोस्ट वेरी इंपोर्टेंट तो नर्व क्रैनियल नर्व भीतर जहाँ भी गुटे क्वेश्चन सियोर दबा ठीक अच्छे तो बी प्रिपेयर तो समस्त मन रखिपाई बाउंड सब नर्व गुड़ाक ठीक अच्छे तो 12टा नर्व केतटा नर्व थाए हमर टोटल 12 तो क्रैनियल 12टा भीतर रेस्पोंसिबल कोन मोस्ट समस्त मन रखिबा निहाती दरकार देन पळे आसले हमर कोन ना सेम से जहाँ कही एबे क्वेश्चन अछि कोन ट्राइजेमिनल नर्व रेस्पोंसिबल फॉर कहा पई ना कोन कही ना सेंसरी ऑप्शन बी सेंसरी इंटरवेंशन फेस मोटर इनर्वेशन एंड मसल मास्टिफिकेशन तो ट्राइजेमिनल नर्व होचे कोन फेस रो रेस्पोंसिबल ऑफ फेस एंड मोटर इनर्वेशन देन 29 देन फेशियल नर्व कहा रेस्पोंसिबल एठी कहला नहीं एठी कोन कहूची ना डैमेज टू द फेशियल नर्व मोस्ट लाइकली कॉज जदि डैमेज तो फेशियल नर्व तार कोन देखा जिवो कॉजेस ना लॉस ऑफ विजन और ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड और paralysis of the muscles of the facial expression then inability to stick out of the tongue तो जीभ हम बाहर करि पारबानी बाहर को तो करेक्ट आंसर होची कोन ना जेते बेले हमर डैमेज होची फेशियल नर्व कोन होचे पैरालिसिस ऑफ द मसल फेशियल एक्सप्रेशन ता हमर कोन वन साइड होता है तो पैरालिसिस ऑफ मसल फेशियल एक्सप्रेशन ऑन वन साइड तो पैरालिसिस होता है ठीक अछि वन साइड पैरालिसिस जोटा फेस रो then question number 30 which cranial nerve responsible for the sense of hearing and balance equilibrium कोन कहिथिले ना हमर वेस्टिबुल कोक्लियर तो वेस्टिबुल कोक्लियर नर्व कोन responsible for hearing and balance then 31 कहला vagus nerve has the most widest distribution effect which major system तो vagus nerve टा डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिंग को ऑर्गन को करि थाए नंबर ए रे अछि मसल ऑफ द आई then sensory innervation of the face then parasympathetic regulation of the heart lungs digestive tract or sense of smell तो भागस नर्व टा कोन करथे ना हमर parasympathetic regulation of the heart and lungs एवं digestive tract तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी देन our next 32 कहला टेस्ट ऑफ द गैग रिफ्लेक्स एक्सेसरी ऑफ द फंक्शन ऑफ व्हिच टू क्रैनियल नर्व को क्रैनियल नर्व हमर कोन टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स को एसोसिएट करथे कोन तो करेक्ट आंसर अछि कोन ना हमर ग्लोसोफैरिंजियल एवं भागस नर्व व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर टेस्ट एंड गैग रिफ्लेक्स तो करेक्ट आंसर अछि ऑप्शन बी देन नेक्स्ट क्वेश्चन the ability to shrug the shoulder and turn the head against resistance is primarily controlled by कहा द्वारा कंट्रोल होता है शोल्डर एवं ट्रंक ठीक अछि कौन कहला ना ऑप्शन ए रे अछि हमर हाइपोग्लोसल एक्सेसरी नर्व ट्रोक्लियर नर्व ओकुलोमोटर नर्व एंड द करेक्ट आंसर इज हमर कोन ना हमर एक्सेसरी नर्व ऑप्शन बी इज द राइट आंसर
The next question 34. Which cranial nerve is primarily motor and control the muscles tongue essential for speech and swallowing? କ'ଣ କହିଥିଲି ତ ହାଇପୋଗ୍ଲୋସାଲ ନର୍ଭ ଯେନ୍ଟାକି କ୍ରାନିଆଲ ନର୍ଭ X12 cranial nerve which is responsible for control of muscle tongue ଏବଂ speech and ଆଉ କ'ଣ muscle tongue speech ଏବଂ swallowing. Then 35. The parasympathetic innervation to the parotid salivary gland is carried by which nerve? କୋଉ ନର୍ଭକୁ କ୍ୟାରି କରିଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପାରାସିମ୍ପାଥେଟିକ୍ ଇନୋଭେସନ୍. ଏରେ ଅଛି ଫେସିଆଲ, ଗ୍ଲୋସୋଫାରେଞ୍ଜିଆଲ, ଭାଗସ୍, ଟ୍ରାଇଜେମିନାଲ. ତ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଆମର ଗ୍ଲୋସୋଫାରେଞ୍ଜିଆଲ. ଅପସନ୍ B is the right answer. The next question 36. Which cranial nerve is test of a patient asks for follow finger moving laterally? Abduction of eye. Co cranial nerve ଆମର abducens which is responsible for moving of eye. The next 37. The basal ganglia or nuclei system is critically involved in. କାହାକୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରିଥାଏ basal ganglia? ଏରେ ଅଛି regulation of the sleep wake cycle, initiate and smoothing movement, suppressing unwanted movement, then long term memory storage, auditory processing, and the correct answer is option B, initial and smooth movement ଏବଂ suppressing the unwanted movement. Option B is the right answer. The next 38. Which specific nucleus of the basal ganglia degenerates in Parkinson disease lead to the deficit in dopamine? तो କୋଉ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟରଟା ଆମର କ'ଣ ବାସାଲ ଗେଙ୍ଗଲିଆଟା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଡିଜେନେରେଟିଭ୍ ପାର୍କିନସନ୍ ଡିଜିଜ୍ରେ ଆମେ ଲିଡ଼ିଂ ଟୁ ଡେଫିସିଟ୍ ଇନ୍ ଡୋପାମିନ୍ଟା ଆମର ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ୍ ଡୋପାମିନ୍ ଦେଖାଯାଏ. କେଉଁଟା ନା ଆମର ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଆ ନିଗ୍ରା କ'ଣ କରିଥାଏ ଇଏ କରିଥାଏ ଡୋପାମିନ୍କୁ ଆମର लो କରିଥାଏ. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ବାସାଲ ଗେଙ୍ଗଲିଆ. ବାସାଲ ଗେଙ୍ଗଲିଆର ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଆମର ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନିଗ୍ରା. ଏଇଟା ହେଉଛି ସବଷ୍ଟାନ୍ସ ନିଗ୍ରା. ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ନା ଆମର ରେଡ୍ ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟସ୍. ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଟେଗାମେଣ୍ଟମ୍. ଟେଗାମେଣ୍ଟମ୍ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ସବଷ୍ଟାନ୍ଟିଆ ନିଗ୍ରା. Then next 39. The amygdala or a nucleus within the temporal lobe and primarily associated with kaha dwara na formation number A ରେ ଅଛି regulation of the body temperature and thirst, processing of emotion especially fear and aggression, formation of new declarative memory or coordinating motor activity. କ'ଣ କରିଥାଏ ନା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରୋସେସିଂ ଅଫ୍ ଇମୋସନ୍ ଏସ୍ପେସିଆଲି କ'ଣ କେଉଁ ଇମୋସନ୍ ଆମର ଫିଅର୍ ଏବଂ ଏଗ୍ରେସନ୍. ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ question number 40. Which diencephalon structure act as the main gateway or relay center for sensory information ascending to the cerebral cortex? Number option ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଆମର hypothalamus, pineal gland, thalamus, pituitary gland. Correct answer is thalamus. Then 41. The nucleus in the hypothalamus is the considered to the body master
biological clock regulating circadian rhythm is କ'ଣ न्यूक्लियस कोठी नाम इन द हाइपोथैलेमस कौन कनसीडर कौन करें द बॉडी मास्टर बायोलॉजिकल क्लॉक एवं रेगुलेट द सर्कुलेटरी रिदम होची रिदम को किए कनसीडर करें नंबर ए कहला पैराभेंडिकुलर न्यूक्लियस आर्क्यूट न्यूक्लियस और सुप्रा चेस्टामेटिक nucleus SNC or ventromedial nucleus, and the correct answer is SNC. Option C is the correct answer. Then 42, the primary auditory nuclei are located in the which part of the brain? तो primary auditory nuclei ब्रेन स्ट्रीम को पार्ट रे हमर प्रेजेंट थाए ए रे अछि मेडुला ऑब्लोंगेटा midbrain pons cerebellum, and the correct answer is option C, pons. And then question number 43, the hippocampus, a key structure for the formation of new long term memory, is located within कोठी हमर कोन जोटी फॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरीटा हमर लोकेट होता है ना पेरिटल लोब, फ्रंटल लोब, occipital lobe or temporal lobe. Correct answer is temporal lobe. Option D is the correct answer. Then we go to next question 44. Which nucleus in the brainstem is the primary source of the neurotransmitter norepinephrine or noradrenaline for most of the central nervous system, crucial for arousal and attention? कोटा नामर लोकस कौन लोकस कोरिलस देखो यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर देखो यहाँ हूँ न्यूरोट्रांसमीटर गोटे पार्ट कौन नामर लोकस कोरिलस जोटा कि आमर सेरिबेलम अच्छी देन हिप्पोक्राम्स जस्ट बिलो टिके. Then next 45, the collection of the nucleus is known as nuclei are the primary source of major CNS neurotransmitter is serotonin. The correct answer is serotonin. Then वीडियो बेसी लंबा हो जाए से डायरेक्ट आंसर कही दूची. देन कहला डैमेज टू द putamen and quadrate nucleus is the major feature of which neurodegenerative disease characterized by cornea. तो डैमेज ऑफ कौन करें नामर पुटामेन एंड क्यूडेट न्यूक्लियस जिनटा कि मेजर फ्यूचर ऑफ न्यूरोडिजेनेरेटिव डिजीज ऑफ कॉर्निया कहा द्वारा नामर को डिजीज नामर हंटिंगटन डिजीज. करेक्ट आंसर होची हंटिंगटन डिजीज. ऑप्शन सी. देन 47, which brainstem nucleus contain the cell body of the lower motor neurons for the hypoglossal nerve? को ब्रेनस्टेम न्यूक्लियस टा कंटेन करते सेल बॉडी एवं लोअर मोटर न्यूरॉन कोटा नाम हाइपोग्लोसास न्यूक्लियस. जेहेतु हाइपोग्लोसाल नर्व टा कंटेन करे से कौन नाम हाइपोग्लोसाल न्यूक्लियस टा ब्रेनस्टेम को कौन सेल बॉडी एवं लोअर मोटर न्यूरॉन को कंटेन करता है. देन नेक्स्ट 48, the two nucleus in the hypothalamus responsible for producing the hormone oxytocin and the vasopressin are the
को दुईटा न्यूक्लियाई रेस्पॉन्सिबल फॉर सिक्रेशन करते कौन ऑक्सीटोसिन एंड भासोप्रेसिन ए अच्छी कौन सुप्राचियामास्टिक एंड आर्कुएट न्यूक्लियाई सुप्राऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंटीरियर पोस्टीरियर न्यूक्लियाई मामालेरी बॉडी एंड थैलामस करेक्ट आंसर होची कौन हमरो सुप्रा ऑप्टिक एंड पारावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर व्हिच कौन सिक्रेशन करता है रेस्पॉन्सिबल हार्मोन ऑक्सीटोसिन एवं भासोप्रेसिन then 49 which midbrain nuclei are involved in the regulation of the starter reflex and orientation head towards sudden visual auditory stimuli को midbrain नामर superior and inferior colliculi option C is the correct answer and the last one 50 रे कौन कहूँ ना कहला द मोटर portion of the vagus nerve originated from the which brainstem nuclei contributing to the control of pharyngeal and laryngeal muscle कोटा आमर बोथ न्यूक्लियस एम्बिगस एवं डोर्साल मोटर जिनटा कि ऑरिजिनेट होता है आमर कहा को ब्रेनस्टेम न्यूक्लियाई एवं कंट्रीब्यूट करता है कंट्रोल ऑफ द फेरेंजियल एवं लारेंजियल मसल्स तो आपण मान को वीडियोटा केमती लागिला प्लीज आपण मान कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे तो आपण मान को मो गुड क्वेश्चन करते नेक्स्ट क्लास में से आंसर देबी तो क्वेश्चन होची आपण माने कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे तो क्वेश्चन है लार्जेस्ट नर्व इन द ह्यूमन बॉडी कोड आपण माने कमेंट माध्यम निश्चय जनइबे टिल देन एंड टेक केयर एंड बाय बाय नेक्स्ट क्लास में आउट इन सिस्टम ने कि आपण डिस्कशन करी तो थैंक यू जय जगन्नाथ।